कौन BCI के डेमो के लिए वॉलंटियर करेगा? उसके बाल भी छोटे होने चाहिए. सो करना भी आपने. सो मेरे ख्याल में आप सब बताती भी रहे हो क्या रहा है यहाँ पे. सो दिस इज द डिवाइस वी आर यूजिंग हियर. लेट मी शो यू. इट्स अ कमर्शियल डिवाइस इमोटिव के नाम से. ये तकरीबन $1,500-2,000 की आती है. और यू विल सी कि अभी ये वेट कर रही हैं इलेक्ट्रोड्स को. इसका लिक्विड इसके साथ आता है. यू कैन ऑल्सो बाय दैट लोकली. It was a startup which raised money and they managed to run a full company now. So they're working very well now. Commercially, they're selling a lot of devices now. Marketing के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. Yeah, so the data to look at insights, how people are reacting to ads, how people are looking at live material. Because this is also a remote device, so you can actually use it also while walking if you want to. So ambulatory जितना काम है उस पर काम करते हैं ये लोग. इसके में हमें ये 14 वाला है ना. ये वाला कितने इलेक्ट्रॉड्स इसके? I think 14. 14 वाला. ये 14 वाला है. सो हम इसे काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ इलेक्ट्रॉड्स ख़राब भी हो चुके हैं. बट आइडिया इज़ यू विल सी जैसे उसका कॉन्टैक्ट बनना शुरू होता है आपको पता चल जाता है कि वो एक्टिव है नहीं एक्टिव है. सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा. यू विल स्टार्ट लुकिंग एट इट. एंड रिसेंटली वी यूज्ड इट वी विल बी यूजिंग इट इन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे वी लुकिंग एट के बाई स्टैंडर इफेक्ट क्या होता है इन VR के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज़ अ हरासमेंट, इफ देयर इज़ अ फीमेल गोइंग इन अ बस एंड देयर इज़ अ हरासर और वो ख़ास तरीके से रिएक्ट कर रहा है एंड देयर बाई स्टैंडर्स जो उसको देख रहे हैं बट दे डोंट गेट अप एंड देन दे डोंट रियली रिएक्ट. वी वांट टू सी दैट हाउ आर दे थिंकिंग particularly because in subjective experience they talk about हमारा concern नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. But there is a very interesting data which you can get through this also. So you see green का मतलब ये है कि ये ठीक हो गया है. और ये हमें काफ़ी इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ी है. हम जो हफ्सा है थोड़ी सी नो प्रेशर हफ्सा, राइट? Black means it's not being detected, right? It's 4 seconds. And green basically means it's connected well. और ब्लैक क्या शो कर रहा है हफ्सा? Black means it's not connected. इट्स नॉट कनेक्टेड कम्प्लीटली. ओके. ये इनमें से एक ख़राब भी है. और एक का वो सेंसर लूज है थोड़ा सा. ठीक है. हाँ अगर ये बाकी 12 में चल जाते हैं दैट्स गुड स्टार्टिंग पॉइंट. So if you want to use this device for a project, you're more than happy to use it with some care. We're fine. Hafza is a go-to person. She sits in our CS lab, in Chisel lab, in my lab. So you can contact her, get the device, work with her, and just play with it. See what happens, you know. Get some data, interesting data. while we're waiting for this to happen, let me मेरे midterms जो मेरे हिस्से के थे वो मैंने check कर लिए हैं and let me give you some feedback. Overall जो सारी तुम लोगों ने मेरे दिल को खुशी दी थी, impression free करके वो सारी midterm को check करके सारी जो है वो fix हो गई है. Midterm में लगता है ऐसे है कि तुम लोगों ने फैसला ये किया कि तुमने exam by कुछ social से ये बिल्कुल clearly पता चलता है कि किसने कौन सा हिस्सा पढ़ा हुआ था क्योंकि उसके सवाल उसको टक्कर आते हैं और कौन से से नहीं पढ़े हुए थे तो उसको नहीं आते. ये क्या है? Maybe apart from question one, ठीक है. everybody has done good. There are people who have done wonderfully well in some questions, and there are other people who have done really well in others. And then फिर वो लगता है साफ पता चलता है कि आपने ये वाला lecture यहाँ absent थे, यहाँ absent सुना नहीं था, यहाँ पे exam के लिए revise नहीं किया. So you know I don't. Dr. Nasir is going to write
and go from there. ठीक है. So अफजा, you got 5 minutes. What can we do with this? So पहले थोड़ा बता दें हो क्या रहा है यहाँ पे. तो बेसिकली जो ये ले लें sensors सारे ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए आपकी. So all the sensors that recording are भी हो रही है. currently green are the ones that are currently transmitting brain activity. इनमें से एक फंक्शनल नहीं है और एक लूज है थोड़ा सा, उसकी वजह से 33% है. आइडियली 50% से ऊपर होना चाहिए. एक Yeah, ये that one, ब्लैक की yes. जिनकी बात हो रही है. ये रेफरेंस है. Yeah, those are the reference nodes, the ones with the black dot in the middle. If they do not work, तो फिर पूरा EEG does not, the device does not work. So basically this is the screen that shows के contact quality कैसी है, and then the next screen is going to show you the EEG quality, which as you can see is not very good because दो sensors चल ही नहीं रहे. But it works somehow. Do not move. The key to it is staying still as you can be. So it goes up to 40% with the broken sensors, but चलें. So आगे चलूँ. Okay. What is the difference in reception between somebody who's completely bald and somebody who has some hair? मेरे पे बहुत अच्छे चलेंगे. Sir, नहीं मतलब दाएं से परफेक्ट रिसेप्शन आएगी यहाँ से. So मैम it does. कंप्लीट बॉल्ड पीपल पे नहीं चलता, हाँ. स्पेशली पीपल हु आर नेचुरली बॉल्ड इतना अच्छा नहीं आता एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव स्टबल, बिकॉज आई थिंक द ऑयल या यू हैव टू प्रेप योर स्किन फर्स्ट उसके लिए फिर. So we have 33%. Okay. See, it's telling you that EEG quality is low, but okay. So I'm just going to use guest mode. Okay, so there are 4 different variants in here. दो हमारे mental commands को detect करते हैं and 2 physical commands को detect करते हैं. One of them we do not have access to, that's the motion, like आपके head tilt वगैरह के साथ, because that's the paid version, we don't have that right now. But other than that, we have performance metrics, which are these. So as you can see, the first 2 are being detected. ये थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 मिनट अगर ऐसे बैठे रहे तो ये बाकी सारे भी चलने लग जाएंगे. There are 6 performance metrics. The first one is engagement, which basically measures कोई कितना dedicated है towards a certain task stimuli. So and then the second one is excitement, which basically shows physiological arousal. Then you have focus, interest, relaxation, and stress. So those are the pretty basic ones. The ऊपर वाले 2 हैं वो ज़्यादा brain stimulus को detect करने के लिए use होते हैं. So they're the ones that get detected first. So the dip basically shows the task shifting, especially in excitement. This is the most important one. उसके अलावा we have mental commands. So these 2, the mental commands and the facial features. So they're both based on ML. इनकी training करनी पड़ती है. So if you are willing, sir मैं कर दूँ. अभी आप हिलना मत please because it's not detecting much right now. Okay, so if it works, which I hope it does. Just a second. Yeah, okay. So you'll have to stare at the screen for 8 seconds. This screen, not that screen. Okay, and in a neutral mode because आपकी baseline set होगी पहले. तो जितनी ट्रेनिंग करेंगे उतना बेहतर होगा. For 8 seconds. Okay, I'm just gonna do one more. आइस मूव नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना. Okay, उसके बाद हमारे पास 4 pre-programmed emotions हैं. So if you smile at the screen for 8 seconds again, it will start your training for your smile data, and then after we're done with the smile, clenched teeth, raised brows, all those emotions, and then when we go into live mode and if you smile, it's going to detect if you're smiling. So that अब इस्तेमाल ये किस तरह होता है is basically suppose you have a game जिसके अंदर you do not want to use, or maybe any software that you don't want to use your hands in, or any external commands or input आप externally नहीं देना चाह रहे, तो
आप अपनी स्माइल के बेस पे येस और नो कर सकते हो या अपने So, अगर एंगल आप के हिसाब से। अगर आप इस पॉइंट को देखें यहाँ पे आपको भी स्माइल डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? मेनली फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? एंड अ कैमरा वुड लुक एट इट एंड वुड नो कि आप हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है और आप सिर्फ ईजी को इस्तेमाल करते हैं, सो ईजी के ज़रिए अगर आपने ट्रेनिंग की हुई, यू वुड नो अ पर्सन इज स्माइलिंग और नॉट। एंड देन दिस इन टर्म्स ऑफ BCI, this works as an input. So if you want to open a door by smiling, you will just smile, and in that game, the door would open. If you want to jump because you want to show aggression, you will show aggression. EEG would know, and then you will start jumping. So आपकी जो action है, it doesn't come from a keyboard or mouse or gestures or facial expressions. Rather, the way you think about it, what you do actually, it becomes an active input to the system. So that's a very basic, crude brain-computer interface. So the computer look at your brain activity, get the data, and then gives input to the system which is being designed. Yeah. So sir, after the training, the camera detecting? No camera, not camera. So these are the sensors which are detecting. That's the whole point. Otherwise, तो ये बहुत आसान काम है. The reason why I asked him to look at the screen is के face level you Yeah. will रहे. Yeah. Okay, I'm gonna change. Because आपकी इसकी जो alignment है, आप इसे कैसे रखते हैं, all these things would matter कि आपकी detection कैसे हो रही है. सर मैं स्माइल ट्रेनिंग करवा हाँ, smile करवाएं. And then we can 1 more minute and then we can stop. So 8 seconds again. So can you show if it smiles then We'll yeah, go to yeah. live mode after this. Okay, काम कर. हिलना नहीं है यार, स्माइल के वक्त हिलना नहीं है. So for example, this is like doing the patterns Yeah, training. yeah. When you're smiling, Yeah. this is like a lab setting. Yeah. Let's say. जब आप असल में smile कर रहे होते हो, there's like an actual stimulus that's making you happy. So doesn't that change your brain pattern? No, so of course that will change, but I think what it's looking at your also the motor function, the way it moves, and Right now, I and think it's just being trained on like the motor उसका. yeah, and also it's not really आपके physiological response को वो नहीं देख रहा है, और वो I think EG के केस में ऐसा होता भी नहीं है. So what we do actually, जो आप बात कर रहे हैं, we usually have a GSR, galvanic response, together with EEG का data, and then we fuse that, जो हमने multimodality की बात की थी. So what you do actually, कि आपकी physiology कैसे response कर रही है to a stimuli, and then आपका EEG basic कैसे response कर रही है, then you fuse it and see कि I am expressing my emotion, but I'm also feeling it. So then that's where the multimodal system comes in. So this is a very, we have been talking about this thing for a lot in the class कि BCI होता क्या है. So this is the basic system. आपको ऐसी बहुत सी devices मिल जाती हैं. There is also a very simple device जो कि आप यहाँ पे band बांध लेते हैं. And that also a very nice device जो कि आपको basic emotion recognition में बहुत help कर सकती है. There is a device जो कि आप यहाँ कान के इधर पहन रहे हैं. ठीक है. Then there are haptics हैं आपकी breathing के लिए. So idea क्या है कि जो आपका interaction है वो mouse keyboard से move होके कैसे advanced level पे जा सकती है. How can you engage with the computer in a much more engaging and interesting manner, जो कि otherwise keyboard mouse से possible नहीं है. अगर आपने कंप्यूटर को बताना है आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, how would you show using a normal input system? कैसे दिखाते हैं आप? जोर जोर से कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, right? And that's one way of aggression. And there are keyboards जिनके अंदर haptic input देने की possibility होती है. So जितना आप ज़्यादा press करते हैं उतना कीबोर्ड बता सकता है कि आपको कितना गुस्सा आया हुआ, सिस्टम बता सकते हैं. And that's what happens when we touch our phone screens. So there are applications, mobile applications, depending on how hard you have touched, you can find patterns कि आपका mood कैसा था आज के दिन के अंदर. All these data coming in with the way you type. So you have a daily pattern of typing कि मैं एक हाथ से करता हूँ, ऐसे करता हूँ. And then you have very specific pattern when you're feeling anxiety, and then आप ऐसे कर रहे हैं या आप दबा के कर रहे हैं, and the system would know because your rest of the week look like this, and there's a spike the way you're now typing, it would say this is not the normal moment for the person. And then the system can also know your EEG data, the system can also know your breathing, can also know your GSR, and the system can guess very well, I think something is wrong, or you're super excited, you got your admission in Cornell, for example, whatever. Yeah, that's what makes you happy nowadays, right? अगर आप junior हैं या senior हैं, the only thing makes you happy is that. ठीक है, I think we can stop here. I think they got the idea. So I'll spare last 15 minutes. I'll just spend 30 minutes on this and then last 15 minutes on a couple of demos. Okay, so अगर आप VR को देखें, and VR
is a very interesting system या टेक्नोलॉजी बताती है कि how do we differentiate between virtual reality and the reality, right? And we think we live in a reality, but we have been talking about this is a construction और जो हर बंदे के लिए उसका अपना So VR के अंदर the term which we use very often here is extended reality. How can we extend our current reality, जो कि हमारी physical reality है? उसके अंदर आपके पास 3 terms हैं. एक आपके पास VR है, एक आपके पास AR है और एक आपके पास MR है. As the name suggests, VR would be completely virtual. You have seen people playing this thing, going, and they have no connection with the real world, right? Augmented reality is that you are in the physical world, but it is being augmented. And mixed reality is a combination, जहाँ पे physical and digital come together. So ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके पास आ रही हैं. ये हिल रहा है एक मिनट. नहीं, आपका कसूर नहीं है, ये VGF का मसला है. Okay. So, जी. Yeah, I'll show you videos of all these things, so you'll know कि होता क्या है. AR के physical VR का आपको समझ आ गई, right? AR means कि आपने AR filters देखे होंगे, right? जो Instagram के अंदर that your face is augmented with a different kind of a layer. So आपके वो you're becoming a cat, you're becoming glasses आ गई हैं. This is all augmented. So आपकी this is augmented in the digital world. And एक augmentation ये है, for example, कि let me show you the video. I think that's a much better way of showing it. So what we do actually very often, जिस पे डॉक्टर बसमा डॉक्टर नासिर ने बहुत ज़्यादा बात की है कि we confuse reality with the physical world and the struggle to understand why virtuality feels so real. Because it feels so real because we are able to construct the same imagery, same thought process in the new reality, which was we able to do that in our physical reality. Because it's not the reality, physical reality, which affords the way we think. It is actually the way we think affords the system shows to us. So, अगर आप इन दोनों कलर्स को देखें, आपको सेम लग रहे हैं? कितने लोगों को सेम लग रहे हैं? और बाज़ लोगों को सेम नहीं लग रहे होंगे, right? नहीं, why? Yeah, there are people. So, अब सेम है या फ़र्क है? Yeah, exactly. So, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको लाइट नहीं लग रहा है? Come on. ये आपको लाइट नहीं लग रहा? Oh, come on. Guys, so like for me, like my brain is telling me that move is lighter when Yeah. it's purple. Yeah. But like I know now, I've seen enough of these twice. Yeah, Okay, it's exactly. But the visual The- information that my eyes are telling me is that move is lighter. Lighter. than the move on the orange. This is very like that. Once you said it, it doesn't actually, because now your brain start processing in a different way. So that's a very different, that's an objective reality. अगर आप in terms of RGB value देखें, so दोनों की RGB value तो same है. But the way we perceive it is a little different. So इस बारे में हमने काफ़ी बात कर चुके हैं. So because मेरे पास time अभी कम है, so I'm not going to go into the details of these things. What I'm going to talk about this whole framework. So ये आपकी इसको हम अपनी लैंग्वेज में वी कॉल इट वर्चुअलिटी कॉन्टिन्यूम. एक तरफ आपके पास रियल एनवायरनमेंट है, उसके बाद आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी है, फिर ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी है, विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड ऑगमेंटेड विद रियल ऑब्जेक्ट्स, एंड देन आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट है. VR हमने देख लिया, फिजिकल के अंदर हम रह रहे हैं, और ये 2 एरियाज जहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे. एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम AR VR की बात करते हैं, सो VR की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट्स हाई इमर्जन. You are actually immersed in the environment. You feel it's real. So that's why there's a very interesting phenomenon, what we call transfer of knowledge. So when you are immersed in an environment which is very similar to the real world environment, whatever you learn in that environment has a capacity that you can transfer it in the physical world also.
राइट सो अगर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है, आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, नया नॉलेज सीख रहे हैं, एंड दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी क्लोज टू द रियल एनवायरनमेंट, तो जो उसका ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दैट्स वाई पीपल आर अगेन एंड अगेन सेइंग VR इज़ एन एक्सेलेंट सिस्टम फॉर ट्रेनिंग. What you learn in VR has a chance and a capacity you can transfer that in the physical world also. But they played the game a few times. Yeah. And then who hasn't played the VR game either, Yeah. they'll have a better chance of being more skilled. So the theory says this, yes, that if you have learned all those techniques, if you have learned how to play golf in the VR environment, when you actually go, you will do a little better as compared to the person who has never been to that environment. You know, for example, we worked on a project आज से 10-15 साल पहले with Boeing के साथ, and Boeing के अंदर, actually my project was with firefighters in Paris. That was one of the first wearable computing and VR project funded by EU as 2005 के अंदर. हमने करना ये था कि जो BSP पे जो पेरिस फायर ब्रिगेड है, उसके लिए हमने एक ऐसा हेड माउंटेड डिस्प्ले बनाना था जिसमें हम उनको ट्रेन कर सकें अबाउट दो सिनेरियोज जो कि अदरवाइज वर इम्पॉसिबल टू ट्रेन इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऐसी बिल्डिंग में आग लग जाती है जहाँ पे उस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करना या उसका मॉडल बना के उसमें ट्रेनिंग करना इम्पॉसिबल है. इमेजिन करें कि आपने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है या आपके पास बुर्ज खलीफा है, उसके अंदर आपने फायर फाइटिंग एक्सरसाइज करनी है, राइट? सो उसके अंदर जाके उन सिनेरियोज को सिमुलेट करना इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड फायर फाइटर्स बहुत सी दुनिया के अंदर आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. जब भी एक्सीडेंट होता है, कुछ और मसला होता है, तो फायर फाइटर्स आर द वन जो जाते हैं. सो जिस तरह हमारी रेस्क्यू 1122 है. सो इस तरह उस केस के अंदर व्हाट वी डिड, वी डेवलप्ड अ होल सिस्टम जहाँ पे उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग VR सिस्टम के अंदर हुई विद अ वेरी स्पेसिफिक हेड माउंटेड डिस्प्ले. एंड देन वी एक्चुअली टेस्टेड के दोस्त जिनकी VR में नहीं होती उनमें फ़र्क क्या है. एंड ऑफ कोर्स वी वर एबल टू सी कि VR ट्रेनिंग का बहुत, बिकॉज दे न्यू कि फॉर एग्जाम्पल हमने कैसे ऊपर जाना है, कैसे दाएं जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन. सो VR कैन बिकम अ वेरी गुड मीडियम फॉर दिस. Just to follow up, Yeah. what other psychological effects of this also are like that? So I know obviously जो Yeah. आपने firefighting वाली example देना, I know obviously experiencing it in real life is vastly different from experiencing Yeah. it through VR. लेकिन और उसका trauma भी फर्क होगा. But even if your brain is still trying to tell you through like proprioception or whatever VR के अंदर that you're in the real world and this you're not experiencing this, I think हमने पहले do feel that it is real. Yeah. So what affects would it still have a psychological effect on you? Yeah. So आप देखें तो I was in a conference आज से 3-4 साल पहले, because VR के अंदर firefighting का scenario is a very interesting scenario which has been done a lot. So what they have actually done, because they don't want to give you this fake feeling कि you're safe, because in VR environment there's a very high chance you would not die, but when you're actually fighting with the fire you will die, agar if things go wrong. So how would you create that even to this level of realism? So for example उसमें था क्या, so when you are wearing a VR headset के अंदर है, so आपके रूम का टेम्परेचर हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके फैंस आपको विंड फेंकना शुरू कर देंगे. So they are able to give you that extreme scenario which you will actually face physically also in that particular room when you are fighting with the fire, so that वो ट्रिगर कर सके उस चीज़ को, and then you forget that you're not in a simulated environment. Only then the learning can improve and can be very realistic. But there are lots of cons also. Okay, people still would feel very safe about it. But when you experience that skiing wala, I can assure you will forget that आप actual नहीं कर रहे, because आपको लगेगा आप गिरने लगे हैं. जो प्लैंक की एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, so उसमें immersion, I don't know if you've seen that. So प्लैंक के अंदर तो बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं. I have not done that. मेरे पास खुद है, मैंने 2 दफ़ा लगाई, I could not finish it. And I'm teaching you this thing, right? I know कि क्या है. But the moment I wear that, मेरा बिल्कुल brain shut off हो जाता है. So why does this come so naturally to us? We, Dr. Nasser and I have taught you Yeah. guys this. Why is high immersion or virtual environment so intuitive for Yeah. us? Why is the learning experience so rich? आपको right? You know at the start. Why बार हम लोगों ने आपको Yeah. बताया है कि how does Jeep right? Pattern recognition. The brain is going to recognize the same patterns
as it does in real नहीं, life. because that's actually how your brain functions. अगर आपके पास टाइम ना हो तो एक बात है, बट कभी अपने आप को देखो, आपका ब्रेन जो है वो, आपने अगर फर्स्ट करो कि यहाँ से वहाँ तक जंप करनी है, तो ब्रेन आपको पहले बताता है कि जंप करोगे तो ऐसे, Yeah. यहाँ पर अगर करना है तो इस तरह से जंप करोगे. So the especially जो मूवमेंट वाला पार्ट है, इट्स अ वेरी sophisticated simulator. वो सिमुलेट कर करके आपको बताता है कि ये हाथ ऐसे करो तो इस एग्जैक्ट मूवमेंट से ऐसे हो जाएगा. और जो कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स हैं वो तो आप बकायदा अगर आप अपने आप को वॉच करो, you know, तो you'll see कि Yeah. आपका ब्रेन प्लान करके आपको डिफरेंट सिमुलेशंस दिखा रहा है. So this is very intuitive. This is very intuitive because you know, this is how the brain actually works. So brain को पता होता है कि ये actual reality नहीं है, पर उसके बावजूद training is much better. Any other question on this? जी. For the firefighter VR simulation, obviously the input modalities will have to be a little different. You can't have controllers when you're trying to rescue Yeah. someone from a fire. How does that work? So what we have done, we did that actually. Abdur Rahman was a team lead for this. So what we did, अब जब हफीज़ सेंटर में आग लगी थी, so we reconstructed the whole Hafeez Center for Rescue 1122. And we designed all the cars and the system. How would you go in? How would you fight with the fire? And what can you learn? What Rescue 1122 can learn from this, so that if in future this happens, they are able to sort of replicate this thinking in the real world. And उसमें बाज़ लोग ये करते हैं कि for example, वो जो आपके पास, what do you call them, वो जो पानी वाला पाइप पकड़ते हैं, I forgot the technical term for that. Hose. जो उसको पकड़ते हैं तो उसको आप weight भी दे सकते हैं. अपने कंट्रोलर के साथ you can actually attach weights, so आपको लगता ही है कि वो actually heavy है. You know, आप उसके अपने यहाँ पे वाइफ के साथ हैप्टिक कंट्रोलर्स आते हैं. सो वो हैप्टिक जब आप यहाँ लगाते हैं, तो जब आप अपने हाथ को मूव करते हैं तो हैप्टिक आपको पूरा पुश देता है कि यार बहुत ज़ोर लग रहा है जाने में. You know, so you try to, yeah, so again, you know, through our वाइफ के जो हैप्टिक कंट्रोलर्स हैं, उससे आपको पुश मिल सकता है, उससे आपको पुल मिल सकता है, आपकी बॉडी में जो आपको राइट वाइब्रेशंस चाहिए होती हैं here and there. So you can actually create that. So all those missing pieces जो कि आपको VR में मिस हो रहे होते हैं, वो physicality के साथ by having the right devices you can augment that also. Again, the point is not कि आप, you know, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च बताती, हम जो बच्चे ACA मेरे से पढ़ चुके हैं, उनको मैंने क्लास में बताया भी हुआ है कि when you record people in a usability testing के अंदर, लोगों को लगता ये है कि there will be an effect of camera. But when people are very engaged with the task, they forget they're being recorded. And we're not even VR. It's really the engagement with the task which defines कि आपको कितनी amount of immersion चाहिए. So over immersion is actually also not recommended. You just need to look at what the task is, what the context is, how much immersion you need, how much reality do you need, and that's pretty much it. You don't need to overdo these things also, you know, because For example, the skiing VR, people can lose balance and fall. So is this due to like visual and hearing deficits or impairment, जिसकी वजह से हमें loss of balance होता है, क्योंकि move तो actually भी कर रहे हैं, we're just standing in one place. Can I answer this? Actually, जो हम balance कर रहे हैं, वो उसमें part of the control lies in the balance organ, जो हमारे ear के साथ है. But there is a very big component of visual feedback, of your proprioceptive feedback. So वो जो visual feedback है, बहुत सारे ऐसे patients जिनका internal balance organ खराब भी हो जाता है, as long as you keep their eyes open, they can very well balance themselves, function normally in the world. So उनको टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ ये करवाते हैं, we make them stand or walk in a line and ask them to close their eyes and they start falling. So जो बैलेंस का कंपोनेंट है वो बहुत हद तक विजुअल भी है, वो जो हमारा विजुअल फीडबैक आ रहा है. तो विजुअल फीडबैक से अगर आप नहीं भी गिर रहे और आपको ये प्रोप्रियोसेप्शन फील नहीं भी दे रही कि आप टर्न कर रहे हो, गिर रहे हो, तो विजुअल फीडबैक इतना ओवरवेलमिंग होता है कि वो आपको बिल्कुल यही फीलिंग देता है कि येस यू आर टर्निंग. और बहुत सारी ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड नहीं, बहुत सारी VR की जो इमर्जन वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह वो गेम्स हैं जिसमें पूरी चेयर भी टिल्ट करती है, उसमें आपको ये सारी ग्रेविटी और ये सब चीज़ों की फीलिंग आती है. actually, अब मैं देखें, I've worked when I was working with the national research organization in Netherlands with TNO के साथ, they had a F-16 का simulator. Can you imagine? F-16. They have them in Assalto also. Yeah. वो हमें तो नहीं जाने देंगे ना, वहाँ तो जाने देते हैं. गैर मुल्की जाने देते हैं. So वो, you know, so वो जो immersion है, you know, it's just,
you just feel that, you know, like, and the transfer is amazing. Transfer is amazing. So let me first show you some videos so that आपको concept समझ आ जाए 3 realities का. ये आपकी mixed reality है. Mixed reality breaks down the barriers between physical and virtual realities. Let's see how we can alter realities across people, places, and objects. Here we have a real office, populated with real things. Let's now adjust reality by adding virtual objects to this physical space. Notice how these objects ये virtual are objects the हैं. real surfaces in the office. Next, let's replace the real person with an avatar. This allows her to be present, even though she is not physically in the room. Now let's adjust the environment itself and make it virtual. Notice how the virtual objects and avatar continue to persist. Finally, let's tie back this entire virtual scene to the physical room. A subtle boundary grid can reveal real obstacles, making it safer to walk around this virtual environment. Mixed reality unlocks exciting new experiences that merge the physical and the virtual worlds. Mixed reality break. Ushering in the next evolution in computing and productivity. Work has a very different definition as we move into the digital revolution, where So ये HoloLens है. thinking and creativity and collaborating with others. So देख रहे हैं कि physical world के अंदर चीजें augment हो रही हैं. When you wear that lens, आपको नजर आएंगी यहाँ पे. Mixed reality, ways to express creatively and also problem solve. And AR is my favorite. I think AR is going to revolutionize the world. It has already done that, but Over the past 3 decades. But there's a lot more that we need to do to support how the workplace is changing. More and more today, people are working remotely. They're not all located in the same physical building. Imagine being able to change the people you're meeting with, the place where you're meeting, or the content that you're collaborating around. all ये in a matter physical of seconds. holograms हैं और ये लोग, they're all looking at the same thing. Information worker can be productive. Inherently saying you want a PC on every desk implies that people have desks. But we know that there's a huge part of the workforce that actually don't have desks. In fact, we think 80% of the workforce are what we call first-line workers, and we think they number over 2 billion worldwide. When computers have the ability to understand the real world, a bunch of really powerful things can happen. दुर्यमान दिखाओगे जरा AR का डेमो मुझे 1 मिनट. If we can show it them here, if you can show your computer or show your phone. हाँ. So there's another project where avatar would be standing in this room. आपके साथ ही कर देता हूँ हाँ, ठीक है, ठीक है. You see how the physical world is being augmented with the digital world? So this is a classical definition of, yeah. So imagine that now this instructor is here and who's teaching the whole course. And next it will be me and standing here and talking about all the slides. And we just did it in 1 second. That's it. Now there's a system, उसका script है पूरे का पूरा, उसकी इसने किया ये है कि उसने detect किया floor कहाँ पे है. जब उसे पता चल गया ये floor है और ये system की surrounding है, उसने right जगह पे जाकर उस बंदे को खड़ा कर दिया. So on your phone you can see that. So you see here कि आपकी environment पूरी देख रहे हैं और वो बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है. ये देखें. Thank you. So this is what we call AR, right? So you're augmenting. There is a very interesting example. Look at this one.
thing. You should be seeing what I'm a new prototype. This is an excellent example of AR. जो मैं बोल रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट करता है उसको मुझे एग्जैक्ट दिखाता है सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑन द गो एंड दैट्स इट्स ऑलरेडी आउट देयर इन द मार्केट and the live translation over here. And there's a beautiful case study for using AR as an assistive tech, improving the quality of life. So you walk into people and start understanding them. That's also augmented reality. And then अभी हमने एक project किया sign language के ऊपर and we used AR where we can look at what the person is saying and then जैसे वो symbol बनाता है उसके ऊपर वो word लिखा हुआ जाता है. So I look at your phone, उस बंदे ने वो sign बनाया, ऊपर लिखा हुआ कि इसका मतलब क्या है. So parents can learn sign language on the go. Right? जी जी जी. Yeah, that's the most difficult thing to understand. होता क्या है कि AR के अंदर, you know, the physical world is being extended with the digital artifacts. जो mixed reality है उसके अंदर यानी physical and digital can talk to each other. For example, अगर मैं आपको example दूँ कि मैं इस स्विच को इस्तेमाल करके MR के अंदर इफ़ आई प्रेस दिस बटन सो हॉलोग्राम खड़ा हो जाएगा. सो जो मेरे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उनकी भी कोई ना कोई इंटरेक्शन होगी. AR के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. VR के अंदर मैं कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हूँ. VR के अंदर, AR के अंदर जो मैंने दिखाया आपको, और मिक्स रियलिटी के अंदर मेरा फिजिकल एंड डिजिटल गो हैंड इन हैंड. यानी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी फिजिकल, वर्क टुगेदर. This, for example, I can have a physical brain here, you know, and then I touch it and then augment होता है, वो कुछ और नज़र आ जाता है, you know, so both things can go hand in hand, physical and digital. जी. No, यहाँ पे कंप्यूटर विजन इस्तेमाल हो रहा होगा ना. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डिटेक्ट करना है कि आपने इस वक्त कौन सा साइन बनाया है, ठीक है, तो मैं कैसे डिटेक्ट करूँगा? CV के ज़रिए, राइट? जब मैंने डिटेक्ट कर लिया उसको, मैंने आप जो दिखाया कि इस वक्त आप कह रहे हैं स्मार्ट, लिखा हुआ जो आ रहा है वो AR है, राइट? सो जो इंटरनल प्रोसेसिंग है उस पर बहुत हैवीली मशीन लर्निंग एंड आपकी कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है. बट उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है दैट हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट रियलिटी अराउंड इट, ऑफ कोर्स वो AR से आ रही, राइट? मेक सेंस? Yeah, that's not that. वो तो आसान तरीन प्रॉब्लम है ना. Once you got the text, जो मर्जी करते रहें. आपको पता है जब एयरपॉड्स आए थे शुरू में, सो लोगों ने बहुत एतराज़ किया एप्पल के ऊपर कि कितने स्टूपिड लोग हैं, इनको पता नहीं है एयरपॉड कैसे बनाने हैं, एक गुम जाता है, एक ये हो जाता है. एंड दैट वाज अ रेवोल्यूशन इन वॉइस कंप्यूटिंग एक्चुअली, because you made them wireless, you made them invisible, people can walk with them, so your whole interaction, if you there are people who just write all emails through Siri, there are people who interact through Siri, right? So अगर वो चलता है, so अब imagine कि आपके पास AR का headset है, imagine आपके पास AirPods हैं, here you go. So you can actually have this multimodality in a very nice way. So मसला क्या है? मसला उस टेक्स्ट को गेट करना है, राइट? कि बोला क्या है. अगर मुझे वो समझ आ गया, मेरे पास किसी नई लैंग्वेज में वो टेक्स्ट आ गया, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. Yeah. No. AR के केस में you don't need any headset. मैंने आपको भी फ़ोन पे दिखाया है. Yes, and that would require them to point in a certain direction. No, but then if I'm wearing a glasses, Google Glass वाली, जो कि बिल्कुल regular glasses है with a camera here, and then उसका half of the glass work as a display, might not be the case. HoloLens के अंदर, so ये एक और बात जो MR की है, mixed reality की, वो ये है कि
VR के अंदर होता क्या है कि VR के अंदर आपको you have no idea about the reality. MR के अंदर you actually also see the physical world. So I can walk while wearing those glasses. It's like that. So the problem right now is कि क्या ये कितने का आया होगा अब्दुल रहमान, ये हमने $200 का लिए, कितने का लिया? Oculus $300 का लिया। 300, ये पहला प्रोजेक्ट जब फिलिप्स ने इस पे काम करना शुरू किया था, वन ऑफ माय कोलीग वाज वर्किंग ऑन इट, $60,000 का हेडसेट स्टैनफोर्ड ने लिया था। $60,000 का। 10 साल के बाद ये 300 की चीज़ मेरी डेस्क पे पड़ी हुई है। सो राइट नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉट के टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज़ के हमारी एक्सेप्टेंस लेवल क्या है इसकी, और हम आर वी विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड और नॉट। टेक्नोलॉजी तो बहुत रैपिडली आगे की जा रही है, वो तो मसला नहीं है। मसला वही जो सोशल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अभी आपने देखा क्या हाल हो रहा था यहाँ पे, आप एक दुनिया में चले गए, अपने दुनिया में खड़े हुए हैं, क्या हो रहा है? जी बोले आप। बिल्कुल, आपके पास इमेजिन करें जो अभी आपने अवाटार क्रिएट किया है, उसके पीछे पूरे का पूरा लैंग्वेज, उसका पूरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। इमेजिन करें कि आपके पास यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आई कैन डू दैट टुमारो इफ आई हैव टू। आपके पास यहाँ सा कैमरा लगा हुआ है जो पूरी क्लास को देख रहा है, और कैमरा देख सकता है कि आपकी क्लास में इस पर कितनी एंगेजमेंट है, कितने लोग उठ के जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं। सो द अवाटार स्टैंडिंग हियर कैन से कुड यू प्लीज ऑल सेटल डाउन, because avatar has a live feed of the camera telling him or her that the class is not very active. So you can do that today, right? उसके पास पूरे का पूरा मेरी क्लास का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उसके पास मेरी स्लाइड्स पड़ी हैं, उसको वो रीड अलाउड कर सकता है, ठीक है? इमेज के कैप्शंस पड़े हुए हैं, राइट? सो यू नो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये, वुड यू एक्सेप्ट हिम और हर एज अ टीचर? दैट्स द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू डील विद। बल्कि आजकल तो एवटार्स रियल टाइम में इंटरेक्ट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू एन ऑपरेटर। सो वो जो एवटार मूवी में एक्चुअली एवटार बना हुआ और वो एक बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है मशीन में बैठा, दैट्स एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि आपने वो फेस के वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो ये इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखे होंगे कि वो आप किसी और का फेस लेके यू स्टार्ट टॉकिंग एंड दैट फेस लुक्स लाइक इट्स टॉकिंग। सो वो दैट्स एन एवटार दैट यू आर कंट्रोलिंग फ्रॉम योर ओन इनपुट। तो ये रियल टाइम में भी हो सकता है, रिगार्डलेस कि वो स्क्रिप्टेड है कि नहीं। ओके, मैंने आपको VR बहुत दिखा दी है, इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल्स अब देना चाहता हूँ, जो मैं प्लैंक की एग्जांपल देना चाहता हूँ। लुक एट दिस वन। दे आर ऑल प्रीमियर लीग के प्लेयर्स हैं। And what is specific about this club? Anybody knows that? नहीं? इसका ऑनर कौन है? चलें, forget it, not relevant. हाँ, शाहिद खान। So ये पुराने वाला नहीं, ये नए वाला वाइब है। सब देखें होगा क्या। How the brain works. This, when I started working in the area of VR, I thought this machine is crazy. I just don't get it. Literally don't get it. आपको पता है मैं यहाँ खड़ा हुआ यार, मतलब स्वेट कर रहा है। आप कभी VR के साथ कभी EEG एक्टिविटी और साथ वो देखें इनका GSR रिस्पॉन्स, ऐसी चीज़ों का आपको हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअली बंदा मरने वाला था। कितने लोगों को पता है कि सांप जो काटा किसी को और बंदा मर गया, बाद में सांप पकड़ा गया और पता चला कि पॉइजनस नहीं था? Really? Yeah. Yes. This happens like Yes. like more than once. कि सांप ने काटा और आप बंदा मर मर गए। गया। बंदा मर गया, that's it. Yes. Dies of fear. So but बाद में सांप पकड़ा गया और सांप पॉइजनस नहीं था. So I mean this is, you know, you are what your brain tells you. You are. इसलिए मुझे CBT बहुत पसंद है। Literally because it tells you कि आप इंसान के बच्चे बन आप सकते हैं। सोचे ना इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। Yeah, exactly. And we're using that, yeah, remember for... So imagine this one. So this is real. That's where immersion comes in.
I'll skip that because I still want you to give you some of the ideas. Look at this video. Look at this video. हमारे पास एक गेम भी अगर आपने खेलनी है तो. ये सोनी प्ले स्टेशन है. There was a hypothesis कि अगर आप बात कर रहे हो ना फिर डर नहीं लगेगा. अब ये बंदा बात कर रहा है. This is what she's looking at. He's gone. Look at it. What happens when we watch movies, right? मैंने वो slide skip कर दी हैं. But you get a very strong feeling while watching horror movies. It's the same thing. इसमें आपके immersion आपकी horror movie में while you're watching on a TV, अगर आप यहाँ पे हैं, so VR के अंदर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं. And imagine आपने अभी 4D rides ली हैं कभी ये कौन से यार ये यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर या किसी और जगह पे एकदम आप पिरामिड्स में जा रहे हैं और एकदम वो सामने से इंसेक्ट्स आ रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन हवा चलती है, आप कहते बस मर गए आज के बाद वापस घर नहीं जा सकते. एग्जैक्टली यही बोलने लगा था कि अब ये जो बंदी आप देख रहे हैं, शी इज इन अ डार्क रूम पार्टली लिट. इमेजिन वो जो छोटा सा पपी सामने आया था जिससे वो डर रही है, एंड देन इट डिसअपीयर्स. और अगर आप वो फिजिकल टच को इसके साथ कोरिलेट करो एंड यू मेक दैट पपी अपीयर क्लोज टू हर एंड समबडी टचेस हर ऑन द शोल्डर, उसकी तो जान निकल जाएगी. सो दिस इज सो इमर्सिव कि आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये, और वो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ योर फिजिकल रिस्पॉन्सेस. Yeah. Yeah. Of course, there are a lot of problems. There's a lot. Uh-huh. There's a lot of fine tuning that's doing it. For example, I was playing Basic. It was not very scary, and it was actually a lot of fun. Yeah. But when I took the headset off, मेरे भी कुछ glitch हुए थे. Yes. My head was still spinning. Yeah. My physiological data was getting skewed. Yes. Yeah. Even though nothing was happening. Yeah. No. Why would you say nothing was happening? I mean, So something was happening. something was happening, and then how would you understand that is the question we are at, right? कि आपका intersection क्या है, the way you express yourself physiologically, but also subjectively कि मेरी feeling क्या आई, उनको आपस में correlate करके how do we understand कि आपकी current condition क्या थी, right? Or there's also a first time effect. I'll show you one last example. There I have lots more examples, but maybe some other day I can share with you. But look at this one because that's also very relevant to us. You haven't tried virtual reality before? No, I never. How are you feeling? Well, in this moment, I just took a pain pill, which I don't care to take. We have this instinct in America to treat things with pills, and that can lead to dependency. There's got to be something else we can do. Okay, let's see what happens here. And what we found was that virtual reality can significantly improve somebody's quality of life. Oh my. Virtual reality is powerful because it's as if the VR has temporarily inoculated the brain against pain. With virtual reality, we've seen a 50% reduction in pain. So do you feel like you're in a hospital now, or? I definitely forget I was in the hospital. What I mean by that is, what matters is not the syringe, what matters is what medicine goes through the syringe. What does the patient want? And I realized at that moment that this was a technology that can overwhelm the mind, and it could be used for evil, but maybe it could be used for good also. You know, we talk about virtual reality like it's one thing, but VR, the headset, is like a syringe. What I mean by that is, what matters is not the syringe, what matters is what medicine goes through the syringe. What is the patient seeing, feeling, hearing? It
experiencing. That's the therapeutic arm of virtual reality. I don't know how we do this, but it would be great to figure out if there's a way to build a sensor into the headset. It relaxes them to the point where they can start to fall asleep. Dr. Brendan Spiegel has been an amazing partner for us. We're using immersive technology to help address the pain crisis in America. Opioids are now the biggest drug epidemic in American history. If you have a major operation or any kind of surgery, or even if you haven't had an operation, you get a pill. If you take 1 day of opioids, there's a 6% chance you'll be dependent on it 12 months later. That's how powerful they are in causing dependency. Recently, I was in the hospital every month. I had extreme pain. So I'm on like 30 different medications right now. There comes a point. I'm in the water with the dolphins. Oh, wow. My back was hurting before you guys came in here. Does this help at all? Yeah. This is not hurting now. We've had now almost 2,500 people at Cedars-Sinai receive therapeutic immersive virtual reality. And it's amazing to me, if I think back to jumping off that building, to see just how this has exploded. And for us to be able to provide a little respite for somebody suffering from pain without having to turn to a pharmacotherapy or an opioid, that's compelling. Back to real reality for a second. With virtual reality, Actually, we also experimented that with our dementia patients. And they come in extreme pain when we take them to Khana Kaaba, Wall of China, Great Wall of China, golf club ke andar, they all of a sudden start forgetting these things. So tell me, what are the neural correlates of this? Yeah, that was my next question. That was my next question. ये तो exactly पढ़ाया गया. Yeah, exactly. That's why among all videos I played this video. Yeah. Pain wali. So brain pain कैसे calculate करता है? Is pain a construct or is pain real? So pain is real and it's a construct, right? It's both. It's both. Overstimulation of any other receptor can also cause pain, but pain itself has receptors. Yes. Very good. And so how does brain calculate कि उसने आपको कितनी pain feel करानी है? By comparing it with the जो alternative pleasure जो है. Yeah. So जो ही आपका जो reward है वो बड़ा होता है, आपकी pain ये नहीं होता कि आपको लगता है कम होती है, वो ऊपर जाती ही नहीं है, उसको नीचे ही रोक दिया जाता है, right? So this is basically you're using a circuit that already exists in the brain in a constructive way to give people with chronic pain relief. Yeah. Imagine the context. You are in a hospital, terrible environment, आप बेड पे लेटे हुए हैं and all you see, अगर आप कभी बेड पे लेटे हैं तो आपको this is all you see, right? And if you transfer that where you are flying and swimming with, उससे बड़ी pleasure क्या हो सकती है? But a pleasure itself is a reward, right? Pleasure is a reward. You go out seeking it, right? A reward, what is the scientific definition of reward? Yes, something the animal will work to experience it. Right? Yeah. So pleasure is a reward in itself. Okay, so I'll still have 10 minutes. So, अब तुम्हारा चल रहा है? हो जाएगा? प्लैंक कौन करना चाहता है आ जाए?